Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a nucleic acid probe might be used to. मतलब nucleic acid probe का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? Here we are provided with four different options. The first option is insert genes into a host cell, make DNA for gene cloning. Option C is saying splice the pieces of DNA, and the last option is find a nucleotide sequence. Fine. So, if we have to understand this question, first of all, we have to know what is the key concept that we have to use for this question. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द न्यूक्लिक एसिड प्रोब. फाइन. सो न्यूक्लिक एसिड प्रोब होता क्या है? So whenever we talk about a probe, हम कह सकते हैं probe क्या है? It is a segment. We can say it is a small segment of the nucleic acid. Either it could be a DNA or it could be a RNA. Fine. So we can say it is a small portion or the small segment of the nucleic acid, either RNA or DNA. And this segment is basically corresponding to a gene. Fine. So it is corresponding to a gene. And what we are doing, हम इसको label करते हैं. Okay. तो ये जो probe है, we are basically labeling it. Fine. अब label कैसे करेंगे? This labeling could be done either by the use of radioactive substances or else could be used, we can use a detectable substances. Fine. We can use detectable substances. For example, the biotin could be used or else the fluorescent could be used. Okay, so what we are doing here, we are basically taking the small segment of the RNA and DNA that is corresponding to a particular gene segment, and we are labeling it with the help of either a radioactive substance or with the help of a detectable substance. Either it could be a biotin or fluorescent or many more. Fine. Now if we talk about what is the major function of using this nucleic acid probe, then we can say we are basically using it for the identification of a particular DNA sequence. Okay, so it is used for identification of a particular DNA sequence that is complementary to the DNA sequence that we are using as a probe. Okay, the major function of using this probe is for identification of the DNA sequence or we can say the nucleotide sequence. चलिए अब ऑप्शंस देख लेते हैं. अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, इट इज सेइंग इंसर्ट द जीन्स इनटू अ होस्ट सेल. अगर बात करें इंसर्शन ऑफ जीन्स, तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ वैक्टर्स. तो इसके लिए वैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि न्यूक्लिक एसिड प्रोब. दैट्स व्हाई ऑप्शन ए विल बी द इनकरेक्ट आंसर हियर. अगर बात करें ऑप्शन बी की, इट इज सेइंग दैट मेक डीएनए फॉर जीन क्लोनिंग. मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर सिंथेसाइजिंग द डीएनए. अगर हमें डीएनए को सिंथेसाइज करना है तो व्हाट वी यूज, बेसिकली यूज अ एंजाइम. हम एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज, या कह सकते हैं डीएनए पॉल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर मेकिंग द डीएनए. तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. अगर बात करें ऑप्शन सी का, इट इज सेइंग दैट स्प्लाइस द पीसेस ऑफ डीएनए. अगर हमें डीएनए को स्प्लाइस करना है या उन्हें छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में ब्रेक करना है डीएनए सीक्वेंस को, वी यूज अ एंजाइम नोन एज रिस्ट्रिक्शन एंजाइम. तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम या कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का इस्तेमाल किया जाता है. अगेन दिस इज द इनकरेक्ट आंसर. एंड इफ वी लुक एट द ऑप्शन D here, it is saying that find a nucleotide sequence. जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, we are using the nucleic acid probe for the identification of a particular DNA sequence or we can say the nucleotide sequence. That's why we can say option D is the correct answer for this question. So from all these, what we have concluded? We have concluded that we use this nucleic acid probe in order to identify a particular
complementary DNA sequence. That's why the option D, that is to find a nucleotide sequence, will be the final answer for our question. I hope you understood the question well. Best of luck.